है उसके जॉइंट सेशन को एड्रेस करने वाले हैं और अब से थोड़ी देर में ये एड्रेस जो है उनका होगा यहाँ पर। और आप देखिए जो वहाँ के सेनेटर्स हैं, जो उनके एमपीज़ आप कहिए, वो वहाँ पर पहुँच रहे हैं और उसकी तैयारी अब एक तरह से यहाँ पर हो रही है। तो ये जो व्यस्त कार्यक्रम है उसमें एक महत्वपूर्ण इवेंट है आज का, जिसमें वहाँ की जो संसद है उसको दूसरी बार पीएम संबोधित यहाँ पर करेंगे। और इससे पहले दोनों ही नेताओं के बीच जो है वो बातचीत हुई, प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। उसमें मीडिया से भी उन्होंने जो है वो उसके बाद रूबरू हुए, उसमें उन्होंने तमाम बातें रखी कि किन चीज़ों पर वहाँ पर चर्चा हुई। और उसके बाद फ़ौरन ही वहाँ से वो इस अगले कार्यक्रम के लिए निकले जहाँ पर ये जॉइंट सेशन होना है, इसको उन्हें एड्रेस करना है, क्योंकि जो बातचीत रही दोनों नेताओं के बीच वो काफ़ी देर तक जो है वो चली। और अब ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो अमेरिका की पार्लियामेंट है वहाँ की, जो अब इंतज़ार यहाँ पर हो रहा है पीएम मोदी का, तो वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे, जो जॉइंट सेशन है यहाँ का उसको एड्रेस करेंगे। तो अमेरिकी संसद में पीएम मोदी का संबोधन होना है, इंतज़ार अब इसका हो रहा है। जो वक्त इसके लिए दिया गया था वो करीब करीब होने को है और काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम आज का रहा है। जो प्रेसिडेंट बाइडेन से जो बातचीत हुई उसके बारे में भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसमें तमाम चीज़ों का जो है वो जिक्र किया गया, किस तरह से दोनों देश जो है वो आपस में सहयोग को बढ़ा रहे हैं, किस जो डील्स हुई हैं, जो समझौते हुए हैं उनके बारे में भी बताया गया, किस तरह से जो जीई है, जनरल इलेक्ट्रिक, वो कैसे विमान के जो इंजन है वो तकनीक साझा करते हुए भारत में बनाएगी। ये एक अहम पड़ाव है इस दोनों देशों के बीच सहयोग का। आप देखिए जहाँ पर ये तकनीक साझा जो है वो हुई है, ये जेट इंजन्स जो है वो काफ़ी काम के हो सकते हैं यहाँ पर, जो हमारी वायुसेना के काम आएंगे। और इसके अलावा जो बहुत सी चीज़ें हैं जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हैं, उसमें आप देखिए स्पेस के क्षेत्र में भी यहाँ पर बातचीत हुई और उसके साथ ही सेमीकंडक्टर को लेकर भी जो है वो यहाँ पर समझौता हुआ है कि क्योंकि सेमीकंडक्टर को देखकर आप जानते हैं कि इसका कितना इस्तेमाल आज के वक्त में होता है और इससे जो शॉर्टेज की समस्या से कई परेशानियाँ जो हैं वो सामने देखी गई कोरोना के वक्त में भी और अब भी हाल में। तो इससे कैसे निपटा जाए, इसको जो है वो ध्यान में रखा जा रहा है। और इसके अलावा क्योंकि दोनों ही बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं और हमारे और अमेरिका के फ़ैसलों का असर जो है वो पूरी दुनिया पर भी पड़ता है और तमाम मुल्कों की नज़र इस बात पर भी रहती है। और भारत और अमेरिका की नज़र भी इस पर है कि कैसे दोनों देश साथ आकर जो वैश्विक समस्याएं हैं उनको भी हल करें। लेकिन अब सीधा आपको तस्वीरें वहाँ की on part of the House to escort His Excellency Narendra Modi into the chamber. The gentleman from Louisiana, Mr. Scalise. The gentleman from Minnesota, Mr. Emmer. The gentlewoman from New York, Ms. Stefanik. The gentleman from North Carolina, Mr. Hudson. The gentleman from Texas, Mr. McCall. The gentleman from Florida, Mr. Waltz. The gentleman from Kentucky, Mr. Barr. The gentleman from Pennsylvania, Mr. Fitzpatrick. The gentleman from Wisconsin, Mr. Gallagher. The gentlewoman from California, Mrs. Kim. The gentleman from North Carolina, Mr. Rouser. The gentleman from South Dakota, Mr. Johnson. The gentleman from South Carolina, Mr. Wilson. The gentleman from New York, Mr. Jeffries. The gentlewoman from Massachusetts, Ms. Clark. The gentleman from California, Mr. Aguilar. The gentlewoman from Washington, Ms. Delbin. The gentleman from Colorado, Mr. Nagus. The gentleman from New Jersey, Mr. Pallone. The gentleman from New York, Mr. Meeks. The gentleman from California, Mr. Barra. The gentlewoman from Washington, Ms. Jayapal. The gentleman from California, Mr. Khanna. The gentleman from Illinois, Mr. Krishnamurti. The gentleman from Michigan, Mr. Tanadar. The members of the escort. Oh, sorry. The President of the Senate, at the direction of that body, appoints the following senators as members of the Committee on the part of the Senate to escort His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India, into the House chamber.
The senator from New York, Mr. Schumer. The senator from Illinois, Mr. Durbin. The senator from Minnesota, Ms. Klobuchar. The senator from Virginia, Mr. Warner. The senator from New Jersey, Mr. Menendez. The senator from Kentucky, Mr. McConnell. The senator from West Virginia, Mrs. Capito. The senator from Iowa, Ms. Ernst. The senator from Montana, Mr. Daines. And the senator from Idaho, Mr. Risch. That is. The members of the escort committee will exit the chamber through the lobby doors. तो किसी भी क्षण पीएम मोदी जो हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। जॉइंट सेशन है ये यूएस कांग्रेस का, जहाँ पर वो संबोधित करेंगे। आप देख रहे हैं कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो उन सभी का नाम लिया है सेनेटर्स का जो एस्कॉर्ट करके पीएम को यहाँ पर लाएंगे। इसके पहले जो बयान हैं दोनों देशों के प्रेसिडेंट बाइडेन और पीएम मोदी ने वो दिए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद। अब यहाँ पर ये दूसरी बार यूएस की संसद को संबोधित करेंगे। It's an honor. Thank for this opportunity. Well, of all the people I wanted like to do a joint session. Staff personally, otherwise, without you, one cannot do. Yes. Excellency. It's an honor. Thank you. Mr. Speaker, the Acting Dean of the Diplomatic Corps. Take over. अब देख सकते हैं यहाँ पर जो सेनेटर्स हैं उनकी नज़रें दरवाजे की तरफ लगी हुई हैं कि किसी भी क्षण अब पीएम मोदी वहाँ से अंदर आएंगे, यहाँ पर संबोधित इनको करेंगे। और ये बहुत ही कम ऐसे जो नेता हैं जो अमेरिका के बाहर के, उन्हें 2 बार ये मौका मिला होगा कि अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को वो संबोधित करें, लेकिन पीएम मोदी को ये न्योता मिला करने का और यहाँ पर वो पहुँचे हैं। काफ़ी पैक शेड्यूल है पूरे राजकीय दौरे का, लेकिन ये एक बड़ा सम्मान है जिस तरह से यहाँ के सेनेटर्स ने इनवाइट किया। राजकीय दौरे में ये भी एक होता है, लेकिन तभी होता है जबकि सेनेटर्स जो हैं बड़ी संख्या में वो इस बात से सहमत हों कि जो विजिटिंग नेता हैं वो संबोधित करें। The President's Cabinet.
ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ ताबिश ये देखना कि यहाँ पर पीएम क्या कुछ कहते हैं। ये दूसरा उनका संबोधन है यूएस की जॉइंट सेशन का, संयुक्त सत्र है ये, और काफ़ी नज़रें इस पर लगी हैं कि वो क्या कुछ यहाँ पर बोलेंगे। सवाल उनसे पूछे गए, लोकतंत्र पे सवाल पूछे गए जब प्रेस ब्रीफिंग उन्होंने की द्विपक्षीय वार्ता के बाद, तो उन्होंने बड़ा सीधा सीधा जवाब दिया लोकतंत्र को लेकर और क्लाइमेट चेंज को लेकर। तो अब यहाँ पर जब वो संबोधित करेंगे तो सबकी नज़रें इस पर होंगी कि किन मुद्दों को वो यहाँ पर छूते हैं और क्या कुछ कहते हैं। क्या वो रूस यूक्रेन के बारे में कुछ कहेंगे या फिर बाकी जो मुद्दे हैं, जो वैश्विक स्थिति बनी है वहीं तक रहेंगे। उन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध के घटनाक्रम की बात की। दूसरी तरफ जो प्रेसिडेंट बाइडन हैं उन्होंने ब्रूटल वॉर ऑफ रशिया कहा। तो ये सभी चीज़ें जो है यहाँ पर जो एडिटोरियल्स लिखे गए हैं अमेरिका के अखबारों में, उनमें भी ये कयास लगाए गए हैं कि क्या कुछ यहाँ पर कहते हैं और किस तरह की उम्मीदें जो यहाँ के सेनेटर्स हैं वो कर रहे हैं कि पीएम मोदी क्या बोलेंगे। लेकिन ये बड़ी चीज़ है कि दोनों ही जो पार्टियां हैं रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, उनके सांसदों ने अधिकतर सांसदों ने काफ़ी स्वागत किया है इस दूसरे संबोधन का, दूसरी बार जो संबोधित करने जा रहे हैं वो संयुक्त सत्र को। बिल्कुल, ये तो महत्वपूर्ण होगा कि किन किन बातों का वो जिक्र यहाँ पर करते हैं जब वो यहाँ की संसद को संबोधित करेंगे। लेकिन इससे पहले जो मुलाकात हुई प्रेसिडेंट बाइडन के साथ उनकी, वहाँ पर जिन चीज़ों का जिक्र किया गया, जिनकी चर्चा हुई, उनके बारे में बताया गया, उसमें अगर ध्यान दें कादम्बी तो बहुत सी मुद्दे ऐसे हैं जिस पर अमेरिका की नज़र है और इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण जो है वो रही है। चाहे आप ट्रेड की बात करिए या फिर आप साउथ चाइना सी से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं जिस पर अमेरिका की नज़र रहती है। यूक्रेन को लेकर जो समस्याएं हैं उसका भी पीएम ने जिक्र किया कि किस तरह से भारत जो है वो अपनी तरफ से भूमिका निभाता रहा है शांति बनाए रखने की जब जब ज़रूरत पड़ी है। तो वो चीज़ें भी हैं जो अमेरिका में चर्चा में रहती हैं या उनके लिए बड़े मुद्दे हैं और जिस पर वो चाहेंगे कि क्या भारत का दृष्टिकोण है, क्या हमारा नज़रिया है, उस पर चर्चा पहले भी यहाँ पर हो चुकी है, जिक्र तो हो ही चुका है। अब उस पर किस तरह से पीएम यहाँ पर अपनी बात रखते हैं ये भी यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा। और जिस तरह से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं उस पर तो नज़र यहाँ पर है ही। और ये जॉब का जो जिक्र प्रेसिडेंट बाइडन ने यहाँ पर किया, ये एक मुद्दा बड़ा अमेरिका में भी है और क्योंकि वहाँ के इलेक्शंस भी जो है वो होने हैं, तो इसका असर जो है वहाँ पर कैसा पड़ सकता है ये भी ज़रा आप थोड़ा समझाइए। क्योंकि जाहिर है वहाँ पर जो प्रेसिडेंट बाइडन बोलते हैं या वो जिन चीज़ों का जिक्र करते हैं उनके जहन में भी होगा कि वो वहाँ की जनता को भी एड्रेस एक तरह से कर रहे हैं इसके साथ। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वहाँ पर जो इंडियन डायस्पोरा है उसका स्ट्रेंथ क्या है। बहुत 41 लाख के करीब बताया जा रहा है, 1% है वहाँ की पॉपुलेशन का, लेकिन ये वो पॉपुलेशन है जो बेहद इन्फ्लुएंशियल है। अगर आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में ही देखें तो आप दर्जनों ऐसे अधिकारियों को देखेंगे जो भारतीय मूल के हैं। ये अपने आप में ये कहानी कहता है कि किस तरह से वहाँ पर जो यहाँ से गए भारत के लोग जो वहाँ पर बसे जाकर उन्होंने किस कदर मेहनत की होगी, किस तरह से कम्युनिटी में शामिल हुए होंगे और किस तरह से एक पॉलिटिकल आवाज़ बनने की भी कोशिश की होगी। जो 2024 का जो प्रेसिडेंशियल रेस है उसमें भले ही बहुत मजबूत पोजीशन में ना हो, लेकिन दो ऐसे भी हैं जो भारतीय मूल के हैं। तो ये सभी चीज़ें काफ़ी देखने वाली हैं और जो ये पूरी एक कम्युनिटी है जो इंडियन अमेरिकन्स की है वो काफ़ी एजुकेटेड है, बहुत हाईली प्लेस्ड है अधिकतर जगह पर और इन्फ्लुएंशियल मानी जाती है और कई उसमें ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी अमीर भी माने जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें एक तरह से एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाती हैं कि जो भी पार्टी है वो इस पूरे तबके को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है ताकि वो इन्फ्लुएंस जो है वो नज़र आए, ना सिर्फ वोट बैंक बढ़े बल्कि जो उनका एक इंक्लूसिव एक दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से एक पूरे दुनिया को समेट के या फिर यहाँ पर जो लोग आए हैं वो Mr. Speaker, the Prime Minister of the Republic of India.
Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. Mr. Speaker, Madam Vice President, distinguished members of the US Congress, ladies and gentlemen, Namaskar. It is always a great honor to address the United States Congress. It is an exceptional privilege to do so twice. For this honor, I extend my deepest gratitude on behalf of the 1.4 billion people of India. I see that nearly half of you were here in 2016. I feel your warmth as old friends. I can also see the enthusiasm of a new friends in the other half. I remember Senator Harry Reid, Senator John McCain, Senator Orrin Hatch, Elijah Cummings, Elsie Hastings, and others who I met here in 2016 and who are sadly no longer with us. Mr. Speaker, standing here 7 Junes ago, that is the June when Hamilton swept all the awards, I said that the hesitations of history were behind us. Now, when our era is at a crossroads, I am here to speak about our calling for this century. Through the long and widening road that we have traveled, we have met the test of friendship. A lot has changed since I came here 7 summers ago. But a lot has remained the same, like our commitment to deepen the friendship between India and the United States. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time,
there have been even more momentous development in another AI, America and India. Mr. Speaker and distinguished members, the beauty of democracy is the constant connect with the people, to listen to them and feel their pulse. And I know this takes a lot of time, energy, effort, and travel. It is a Thursday afternoon, a fly-out day for some of you. So I'm grateful for your time. I also know how busy you have been this last month. Being a citizen of a vibrant democracy, myself, I can admit one thing, Mr. Speaker, you have a tough job. I can relate to the battles of patience, persuasion, and policy. I can understand the debate of ideas and ideology. But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. I'm happy to help out. I'm happy to help out whenever you need a strong bipartisan consensus. There will be and there must be a contest of ideas at home. But we must also come together as one when we speak for our nation. And you have shown that you can do it. Congratulations. Mr. Speaker, the foundation of America was inspired by the vision of a nation of equal people. Throughout your history, you embraced people from around the world, and you have made them equal partners in the American dream. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And
there is one behind me who who has made history. I am told that the Samosa caucus is now the flavor of the house. I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. Over 2 centuries, we have inspired each other through the lives of great Americans and Indians. We pay tribute to Mahatma Gandhi and Martin Luther King Jr. We also remember many others who work for liberty, equality, and justice. Today, I also wish to pay heartfelt tribute to one of them, Congressman John Lewis. Mr. Speaker, democracy is one of our sacred and shared values. It has evolved over a long time and taken various forms of systems. Throughout history, however, one thing has been clear. Democracy is the spirit that supports equality and dignity. Democracy is the idea that welcomes debate and discourse. Democracy is the culture that gives wings to thought and expression. India is blessed to have such values from times immemorial. In the evolution of the democratic spirit, India is the mother of democracy. Millennia ago, our oldest scripture said, Ekam Sat Vipra Bahudha Vadanti. It means the truth is one, but the wise express it in a different ways. Now, the US is the oldest and India the largest democracy. Our partnership augurs well for the future of democracy. Together, we shall give a better future to the world and a better world to the future. Mr. Speaker,
Last year, India celebrated 75 years of its independence. Every milestone is important, but this one was a special. We celebrated a remarkable journey of over 75 years of freedom after 1,000 years of foreign rule in one form or another. This was not just a celebration of democracy, but also of diversity. Not just of constitution, but also of its spirit of a social empowerment. Not just of our competitiveness and cooperative federalism, but also of our essential unity and integrity. We have over 2,500 political parties. Yes, you heard that right. 2,500. About 20 different parties govern various states of India. We have 22 official languages and thousands of dialects, and yet we speak in one voice. Every 100 miles, our cuisine changes. From dosa to aloo paratha, and from Srikhand to Sandesh. We enjoy all of this. We are home to all faiths in the world, and we celebrate all of them. In India, diversity is a natural way of life. Today, the world wants to know more and more about India. I see that curiosity in this house too. We were honored to receive over 100 members of the US Congress in India over the last decade. Everyone wants to understand India's development, democracy, and diversity. Everyone wants to know what India is doing right and how. Among close friends, I am happy to share the same. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon.
We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. After all, we are 1/6 of the world's population. In the last century, when India won its freedom, it inspired many other countries to free themselves from colonial rule. In this century, when India sets benchmark in growth, it will inspire many other countries to do the same. Our vision is सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास. It means together for everyone's growth, with everyone's trust and everyone's efforts. Let me share with you how this vision is translating into action with speed and scale. We are focusing on infrastructure development. We have given nearly 40 million homes to provide shelter to over 150 million people. That is nearly 6 times the population of Australia. We run a national health insurance program that ensures free medical treatment for about 500 million people. $500 million people, that is greater than the population of South America. We took banking to the unbanked with the world's largest financial inclusion drive. Nearly 500 million people benefited. This is close to the population of North America. We have worked on building digital India. Today, there are more than 850 million smartphones and internet users in the country. This is more than the population of Europe. We protected our people with 2.2 billion doses of made in India COVID vaccines. And that too free cost. I may be running out of continent soon, so I will stop here. Distinguished members, the Vedas are one of the world's oldest scriptures. They are a great treasure of humanity composed thousands of years ago. Back then, women sages composed many verses in these Vedas. And today, in modern India, women are leading us to a better future.
India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. A woman has risen from a humble tribal background to be our head of states. Nearly 1.5 million elected women lead us at various levels. And that is of local governments. Today, women serve our country in the Army, Navy, and Air Force. India also has the highest percentage of women airline pilots in the world. And they have also put us on Mars by leading our Mars mission. I believe that investigating in a girl child lifts up the entire family. Empowering women transforms the nation. Mr. Speaker, India is an ancient nation with a youthful population. India is known for its traditions, but the younger generation is also making a hub of technology, be it creative reels on Insta or real-time payments. Coding or quantum computing, machine learning or mobile apps, fintech or data science, the youth of India are a great example of how a society can embrace latest technology. In India, technology is not about innovation, but also about inclusion. Today, digital performance are empowering the rights and dignity of people while protecting privacy. In the last 9 years, over 1 billion people got a unique digital biometric identity connected with their bank accounts and mobile phones. This digital public infrastructure helps us reach citizens within seconds with financial assistance. 850 million people receive direct benefit financial transfers into their accounts. 3 times a year, over 100 million farmers receive assistance in their bank accounts at the click of a button. The value of such transfer has crossed $320 billion. And we have saved over $25 billion in the process. If you visit India, you will see everyone is using phones for payments, including street vendors. Last year, out of every 100 real-time digital payments in the world, 46 happened in India.
Nearly 400,000 miles of optical fiber cables and cheap data have ushered in a revolution of opportunities. Farmers check weather updates, the elderly get social security payments, students access scholarships, doctors deliver telemedicine, fishermen check fishing grounds, and small businesses get loans with just a tap on their phones. Mr. Speaker, a spirit of democracy, inclusion, and sustainability defines us. It also shapes our outlook to the world. India grows while being responsible about our planet. We believe, Mata Bhumihi Putro Aham Prithviya. This means the earth is our mother and we are her children. Indian culture deeply respects the environment and our planet. While becoming the fastest growing economy, we grew our solar capacity by 2,300%. Yes, you have heard right. 2,300%. We became the only G20 country to meet its Paris commitment. We made renewables account for over 40% of our energy sources, 9 years ahead of the target of 2030. But we did not stop there. At the Glasgow summit, I proposed Mission Life, lifestyle for environment. This is a way to make sustainability a true people's movement. To live it, to be the job of governments alone. By being mindful in making choices, every individual can make a positive impact. Making sustainability a mass movement, we help the world reach the net zero target faster. Our vision is pro-planet progress. Our vision is pro-planet prosperity. Our vision is pro-planet people. Mr. Speaker, we live by the motto of Vasudhaiv Kutumbakam, or the world is one family. Our engagement with the world is for everyone's benefit. The one sun, one world, one grid seek to join us. All is connecting the world with clean energy. One Earth, One Health is a vision for global action to bring
quality health care to everyone, including animals and plants. The same spirit is also seen in the theme when we chair the G20, One Earth, One Family, One Future. We advance the spirit of unity through yoga as well. Just yesterday, the whole world came together to celebrate the International Day of Yoga. Just last week, all nations joined our proposal at the UN to build a memorial wall to honor the peacekeepers. And this year, the whole world is celebrating the International Year of Millets to promote sustainable agriculture and nutrition alike. During COVID, we delivered vaccines and medicines to over 150 countries. We reach out to others, being disasters as first responders, as we do for our own. We share our modest resources with those who need them the most. We build capabilities, not dependencies. Mr. Speaker, when I speak about India's approach to the world, the United States occupy a special place. I know. Our relations are of great importance to all of you. Every member of this Congress has a deep interest in it. When defense and aerospace in India grow, industries in the state of Washington, Arizona, Georgia, Alabama, South Carolina, and Pennsylvania thrive. When American companies grow, their research and development centers in India thrive. When Indians fly more, a single order for aircrafts creates more than 1 million jobs in 44 states in America. When an American phone makers invest in India, it creates an entire ecosystem of jobs and opportunities in both countries. When India and US work together on semiconductors and critical minerals, it helps the world in making supply chains more diverse, resilient, and reliable. Indeed, Mr. Speaker, we were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. Today, India and the US are working together in space and in the seas, in science and in semiconductors, in startups
and sustainability in tech and in trade, in farming and in finance, in art and artificial intelligence, in energy and education, in healthcare and humanitarian efforts. I can go on and go on, but to sum up it, I would say the scope of our cooperation is endless. The potential of our synergies is limitless. And the chemistry in our relations is effortless. In all this, Indian Americans have played a big role. They are brilliant in every field, not just in spelling bee. With their hearts and minds, talent and skills, and the love for America and India, they have connected us. They have unlocked doors. They have shown the potential of our partnership. Mr. Speaker, distinguished members, every Indian Prime Minister and American President of the past has taken our relationship further. But our generation has to honor of taking it a greater heights. I agree with President Biden that this is a defining partnership of this country. Because it serves a larger purpose. Democracy, demography, and destiny give us the purpose. One consequence of globalization has been to cover over concentration of supply chains. We will work together to diversify, decentralize, and democratize supply chains. Technology will determine the security, prosperity, and leadership in the 21st century. That is why our two countries established a new initiative for critical and emerging technologies. Our knowledge partnership will serve humanity and seek solutions to the global challenges of climate change, hunger, and health. Mr. Speaker and distinguished members, the last few years have seen deeply disruptive developments. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity.
As I have said directly and publicly, this is not an era of war. But it is one of dialogue and diplomacy. And we all must do what we can to stop the bloodshed and human suffering. Mr. Speaker, the dark clouds of coercion and confrontation are casting their shadow in the Indo-Pacific. The stability of the region has become one of the central concerns of our partnership. We share a vision of a free, open, and inclusive Indo-Pacific. Connected by secure seas, defined by international law, free from domination, and anchored in ASEAN centrality. A region where all nations, small and large, are free and fearless in their choices, where progress is not suffocated by an impossible burdens of debt. Where connectivity is not leveraged for strategic purposes, where all nations are lifted by the high tide of shared prosperity. Our vision does not seek to contain or exclude, but to build a cooperative region of peace and prosperity. We work through regional institutions and with our partners from within the region and beyond. Of this, Quad has emerged as a major force of good for the region. Mr. Speaker, more than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We must overcome all such forces sponsoring and exporting terror. Mr. Speaker, COVID-19's biggest impact was the human loss and suffering it caused. I wish to remember Congressman Ron Wright and the staff members who lost their lives
to COVID. As we emerge out of the pandemic, we must give shape to a new world order. Consideration, care, and concern are the need of the hour. Giving a voice to the global south is the way forward. That is why I firmly believe that the African Union be given full membership of G20. We must revive multilateralism and reform multilateral institutions. With better resources and representation that applies to all our global institutions of governance, especially the United Nations. When the world has changed, our institutions too must change, or risk getting replaced by a world of rivalries without rules. In working for a new world order based on international law, our two countries will be at the forefront as partners. Mr. Speaker and distinguished members, today we stand at a new dawn in our relationship that will not only shape the destiny of our two nations, but also that of the world. As the young American poet Amanda Gorman has expressed, when day comes, we step out of the shade, aflame and unafraid. The new dawn blooms as we free it. For there is always light if only we are brave enough to see it. Our trusted partnership is like the sun in this new dawn that will spread light all around. I am reminded of a poem that I once wrote. आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। If I were to say it in English, it would be rising its head in the skies, piercing through the dense clouds with the promise of light. The sun has just risen, armed with
a deep resolve, overcoming all the odds to dispel the forces of darkness. The sun has just risen. Mr. Speaker and distinguished members, we come from different circumstances and history, but we are united by a common vision and by a common destiny. When our partnership progresses, economic resilience increases, innovation grows, science flourishes, knowledge advances, humanity benefits, our seas and skies are safer, democracy will shine brighter, and the world will be a better place. That is the mission of our partnership. That is our calling for this century. Mr. Speaker and distinguished members, even by the high standards of our partnership, this visit is one of the great positive transformation. Together, we shall demonstrate that democracy is better and democracy deliver. I count on your continued support to the India-US partnership. When I was here in 2016, I said that our relationship is primed for a momentous future. That future is today. Thank you once again, Mr. Speaker, Madam Vice President, and the distinguished members of this honor. God bless America. Jai Hind. Long live India-US friendship. Thank you. तो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित किया, वहाँ पर जो सेनेटर्स हैं सभी को संबोधित किया और कई विषयों पर उन्होंने अपनी बात रखी, भारत की बात रखी और अमेरिका और भारत के सहयोग की, दोस्ती की, लोकतंत्र की भी बात रखी। और
जो वैश्विक मुद्दे हैं उनको भी उन्होंने वहाँ पर कहा। जहाँ तक भारत और अमेरिका के सहयोग की बात है, उन्होंने कहा अब जिस तरह से डिफेंस में पार्टनरशिप है वो अपने आप में बड़ी चीज़ है और पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा विश्वसनीय पार्टनर हो गए हैं रक्षा मामलों में। उन्होंने इंडो पैसिफिक की भी बात की, कहा कि वहाँ पर घने बादल मंडरा रहे हैं और उसकी इस इलाके की जो स्थिरता है वो एक बड़ी चिंता है और पार्टनरशिप में उस पर भी ध्यान देते हैं। इसके अलावा उन्होंने लोकतंत्र की बात की, कहा लोकतंत्र में डिबेट और डिस्कोर्स दोनों ही ज़रूरी हैं और यहाँ पर इतिहास में हमने देखा है कि किस तरह से जो डेमोक्रेसी है वो इक्वालिटी और डिग्निटी दोनों को ही सपोर्ट करती है, बराबरी और डिग्निटी दोनों को ही सपोर्ट करती है। उन्होंने जो भारतीय डायस्पोरा है, जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, उन्होंने जो हासिल किया है वहाँ पर, उसके बारे में भी बात किया। कमला हैरिस जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ भी इशारा किया कि यहाँ पर वो भी हैं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि है निश्चित तौर पर। और ये जो जब इस बात का जिक्र कर रहे थे वो तो एआई से, जी बिल्कुल कालमी, जब वो कमला हैरिस का जिक्र उन्होंने वहाँ पर किया अपनी बातचीत में, तो एआई के हवाले से उन्होंने वो बात उस वक्त कही। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा जो है वो इतनी हो रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और इंडिया की दोस्ती का उन्होंने जिक्र वहाँ पर किया। और आप देखिए कि किस तरह से स्वागत उनका हुआ यहाँ पर पार्लियामेंट में। और शुरुआत में ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि ये अहम है वहाँ की संसद को संबोधित करना, और दूसरी बार तो और ज़्यादा जो है ये ख़ास हो जाता है। दूसरी बार पीएम मोदी ने यहाँ पर जो अमेरिका की संसद है उसको संबोधित यहाँ पर किया, और उन्होंने बताया कि यहाँ पर इतने सालों में बहुत कुछ बदला है, लेकिन भारत और अमेरिका की जो दोस्ती है वो गहरा करने की जो प्रतिबद्धता है वो जस की तस है, और इस दिशा में जो है वो काम किया जा रहा है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच अब भरोसे की मित्रता है और दोनों देशों के बीच विश्वास भी इसके साथ बढ़ा है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत में किस तरह से जो है वो विविधता है और हम किस तरह से देश जो भारत है वो आगे बढ़ रहा है। और इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र ही चर्चा और विमर्श का ज़रिया है। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत की अगर बात करें तो 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी कुछ वक्त पहले, लेकिन अब दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और हम तेज़ी से जो है वो ग्रो कर रहे हैं, और 2025 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यहाँ पर बन जाएगा। जी, और यूक्रेन पर भी उन्होंने बात की और एक बार फिर से उन्होंने वो बात दोहराई जो उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को बोली थी। उन्होंने कहा था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। यहाँ पे भी संयुक्त सत्र में यूएस कांग्रेस के उन्होंने कहा कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर बट ऑफ डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। बातचीत और कूटनीति से इस मसले का हल होना चाहिए। हम सब जो कुछ कर सकते हैं वो करना चाहिए ताकि ये खून खराबा और जिस तरह से वहाँ पर ह्यूमन सफरिंग है वो कम से कम ख़त्म हो। ये उन्होंने एक बार फिर से यहाँ पर कहा है। एक उन्होंने बात आतंक पर भी कहा है कि 2 दशक हो चुके हैं 9/11 के बाद, और कम से कम 1 दशक 26/11 जो मुंबई हमला है उसमें, लेकिन अभी भी आतंक और रेडिकलिज्म जो है वो अभी भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए। ये जो आइडियोलॉजी हैं वो नया रूप धारण कर लेती हैं, नए फॉर्म दिखाती हैं, लेकिन मकसद एक ही रहता है। ये पूरे मानवता का दुश्मन है आतंक, और इसमें किसी भी प्रकार का इफ्स और बट्स नहीं होना चाहिए। इससे निपटने में सभी तरह से इसको ओवरकम करना चाहिए, और जितने भी ये स्पॉन्सर कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आतंक को, उनसे निपटना चाहिए। एक सीधा निशाना पाकिस्तान की तरफ, और हाल में हमने जो देखा है जिस तरह से यूएनएससी में बार बार चीन जो है वो टेक्निकल होल्ड आतंकियों के डेजिग्नेशन पर कि वो इंटरनेशनल आतंकी है उस पर लगा रहा है, एक तरह से वो भी उन्होंने किया है।
बिल्कुल, और ये बातें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं इस लिहाज से भी, क्योंकि कादम्नी हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरह की बात जो है उनका जिक्र हो सकता है पीएम मोदी के संबोधन में। तो ये अगर आप कहें, आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिससे अमेरिका भी जूझता रहा है, भारत भी जूझता रहा है, और इस पॉइंट पर दोनों ही देश जो हैं वो कई मौक़ों पर इस बात का जिक्र करते आए हैं कि आतंक पर रोक लगाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बाकी आप चीज़ें देखिए कैसे आपसी सहयोग जो है वो बढ़े, और यूक्रेन का भी हम जिक्र कर रहे थे क्योंकि अमेरिका में इस बात को बहुत चर्चा होती है कि वहाँ की स्थिति को लेकर क्या रुख जो है वो रहता है। तो पीएम ने यहाँ पर एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि ये लड़ाई युद्ध का ज़माना नहीं है और यहाँ पर बातचीत से जो है चीज़ों का हल निकलना चाहिए। बिल्कुल, और उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि ये बड़ी शक्तियों को इन्वॉल्व करता है, ये जो लड़ाई है ये बड़ी शक्तियां इसमें शामिल हैं, चाहे रूस हो या यूरोप, तो इसके जो नतीजे हैं वो भी काफ़ी गंभीर हैं। और जो ग्लोबल साउथ है, भारत ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठा रहा है लगातार और एक तरह से अगुवाई कर रहा है, तो उस पर भी बहुत असर पड़ा है इस वॉर का। ग्लोबल ऑर्डर उन्होंने साफ कहा कि उन नियमों पर बेस्ड है, आधारित है, जो कि यूएन चार्टर में है। शांतिपूर्ण रेजोल्यूशन होना चाहिए किसी भी डिस्प्यूट का, और संप्रभुता और जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सोवरेंटी है, उसके लिए इसमें ज़रूरी है कि रेस्पेक्ट हो। ये बात उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कही है। बिल्कुल, और इसके साथ जैसे कि आप देख रहे हैं डिफेंस में डील भी हुई, इसके बारे में भी जो है उन्होंने अपनी बात कही और कहा कि भारत का सबसे अहम डिफेंस पार्टनर अमेरिका है और अमेरिकी कंपनी के विकास से भारत में भी विकास हो रहा है। खासकर जो अभी जेट इंजन को लेकर जीई के साथ डील हुई, जिसमें आप देखिए तकनीक तक साझा करने की बात है वहाँ पर, तो ये चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। और इसके अलावा यहाँ पर भारत और अमेरिका स्पेस और समुद्र में भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा तकनीक की बात आप कीजिए तो टेलीकॉम के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, तो तमाम चीज़ें हैं जिस पर एक पेज पर हम हैं अमेरिका और भारत। अगर आप कहिए जिस तरह स्पेस में नासा को जो है वो जाना जाता है, ऐसे ही इसरो भी बहुत कामयाबी जो है हासिल हमारे अंतरिक्ष क्षेत्र में की है। तो क्या कुछ और कहा उन्होंने, ये आपको जो हाइलाइट्स हैं उसकी वो दिखाते हैं। Mr. Speaker, more than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. तो पीएम वहाँ से निकल रहे हैं, पीएम मोदी वहाँ से निकल रहे हैं। हमने देखा कि स्पीच के बाद कैसे कई सेनेटर्स ने उनको घेर लिया, और स्पीच की जो कॉपीज़ हैं उस पर उनके ऑटोग्राफ उन्होंने लिए, कईयों ने तस्वीरें ली। अभी भी आप देख रहे हैं कुछ लोग वहाँ पर, कुछ जो सेनेटर्स हैं वो वीडियो भी पीएम मोदी की बना रहे हैं। लगातार पीएम उस स्पीच पर ऑटोग्राफ दे रहे हैं, सेनेटर्स उनसे बात कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और साथ में सेल्फी भी ले रहे हैं यहाँ पर संयुक्त सत्र के बाद। तो और कम से कम 10 से 12 बार यहाँ पर उनकी स्पीच पर यहाँ स्टैंडिंग ओवेशन हमने देखा, और तालियां लगातार बजती रहीं यहाँ पर जब पीएम अपना भाषण दे रहे थे। अब वो निकल रहे हैं हाउस से। बिल्कुल, जब वो भाषण दे रहे थे तब तालियां बज रही थी, और जब वो दाखिल हुए यहाँ पर तब भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। This is now dissolved.
The House will continue in recess, subject to the call of the chair. चलिए, तो ये आपने देखी वहाँ की तस्वीरें। तो पीएम अब वहाँ से जो है वो निकल गए हैं। दूसरा कार्यक्रम अब आगे जो होगा उसके लिए। और यहाँ पर आप देखिए, हम बात कर रहे थे किस तरह से वहाँ पर उनको रिसीव किया गया। जब वो दाखिल हुए वहाँ की संसद में, तब भी गर्मजोशी से उनका स्वागत जो है वो किया गया वहाँ के सेनेटर्स की तरफ से। लगभग आप देखिए तस्वीरों में सभी लोगों ने हाथ उनसे मिलाया, वो उनसे मिलने के लिए उनके नज़दीक तक आए। और जब उन्होंने अपना भाषण शुरू किया तो कई मौके ऐसे आए जब खड़े होकर तालियां जो है वहाँ पर बजीं, नारे भी सुनाई दिए, मोदी मोदी की गूंज भी थोड़ी वहाँ पर दिखी। तो तमाम बातें पीएम मोदी की तरफ से यहाँ पर रखी गई। और वो सब मुद्दे जो कहिए आप अमेरिका के लिए भी अहम हैं, उनका भी उन्होंने वहाँ पर जिक्र किया। We were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. The last few years have seen deeply disruptive developments. With the Ukraine conflict, war has returned to Europe. It is causing great pain in the region. Since it involves major powers, the outcomes are severe. Countries of the global south have been particularly affected. The global order is based on the respect for the principle of the UN Charter, peaceful resolution of disputes, and respect for sovereignty and territorial integrity. In the past few years, there have been many advances in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. I can relate to the battles of patience, persuasion, and policy. I can understand the debate of ideas and ideology. But I am delighted to see you come together today to celebrate the bond between world's two great democracies, India and the United States. Thank you. There are millions here who have roots in India. Some of them sit proudly in this chamber. And there is one behind me who has made history. I am told that the Samosa caucus is now the flavor of the house.
I hope it grows and brings the full diversity of Indian cuisine here. Everyone wants to understand India's development, democracy and diversity. Everyone wants to know what India is doing right and how. Among close friends, I am happy to share the same. Mr. Speaker, when I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. We are not only growing bigger, but we are also growing faster. When India grows, the whole world grows. प्रधानमंत्री आज वॉशिंगटन डीसी में लगातार कई कार्यक्रमों में शामिल हैं और कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात कर चुके हैं। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में औपचारिक तौर पर गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राजकीय स्वागत किया गया। माइक्रोन कंपनी की बड़ी घोषणा, भारत में सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्टिंग फैसिलिटी बनाएंगे। माइक्रोन सेमीकंडक्टर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। अमेरिकी दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डीसी में है। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ डिनर किया। जो बाइडेन ने पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के साथ नेशनल साइंस फाउंडेशन के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देश मिलकर इंडिया यूएस टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू करने के बारे में सोच सकते हैं। वॉशिंगटन में पीएम मोदी ने जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ एच लॉरेंस कल्क जूनियर और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सीईओ संजय मेहरोत्रा से भी मुलाकात की। वॉशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान बजाए गए। पीएम मोदी वहां पर मौजूद लोगों से उन्होंने मुलाकात भी की। मणिपुर के हालात पर गृह मंत्रालय ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। मणिपुर में करीब 1.5 महीने से शांति बहाली के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हिंसा की घटनाएं थम नहीं रही। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी के रिश्तेदार कारू सिंह के आवास पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। कारू सिंह जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के करीबी हैं। पटना में 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। तमाम विपक्षी दलों के नेता बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच रहे हैं। बैठक को लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। विपक्षी नेताओं की मीटिंग को लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि ये मीटिंग एक बदलाव की मीटिंग साबित होगी। सब लोग अपनी बात रखेंगे। बैठक में मुद्दों की बात होगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने मणिपुर के हालात पर वीडियो संदेश जारी कर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस हिंसा ने पूरे देश की अंतरात्मा पर गहरा घाव छोड़ा है। सोनिया गांधी ने मणिपुर के लोगों से शांति की अपील की है। एनसीपी नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा की पेशकश की और कहा कि वह पार्टी संगठन में
काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो पार्टी को मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत से काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों की समस्याओं को जल्द समाधान का आश्वासन दिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यात्रियों से भरी बोलेरो गहरी खाई में जा गई। हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी संसद में पीएम मोदी ने कहा भारत जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। साथ ही कहा अमेरिका भारत का सबसे अहम रक्षा सहयोगी। अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर साधा निशाना। कहा आतंकवाद से निपटने में अगर मगर न हो, आतंकवाद निर्यात करने वाली ताकतों पर काबू पाना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में पीएम ने कहा भारत में किसी तरह के भेदभाव का कोई सवाल ही नहीं। कहा भारत की रगों में है लोकतंत्र। जीई एयरस्पेस भारत में बनाएगी फाइटर जेट इंजन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एमओयू पर हुए दस्तखत। कंपनी ने इसे ऐतिहासिक शुरुआत बताया। तो पीएम मोदी ने अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन को यहां पर संबोधित किया और इसमें कई अहम बातों का उन्होंने जिक्र किया। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन किया उसमें कहा कि अमेरिका भारत के मजबूत रिश्ते हैं और अमेरिकी संसद को दूसरी बार उन्होंने संबोधित किया और ये करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री वो हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की अगर बड़ी बातों की हम बात करें तो उन्होंने कहा कि आतंकवाद और कट्टरता सबसे बड़ा खतरा है और इससे निपटने में कोई अगर मगर ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि आतंकवाद निर्यात करने वाली ताकतों पर काबू पाना होगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष के काले बादल घिर आए हैं। यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। ये युद्ध का ज़माना नहीं है, ये बातचीत और कूटनीति का ज़माना है। अमेरिका भारत का सबसे अहम रक्षा सहयोगी है जो पहले नहीं था। अंतरिक्ष समुद्र में हम मिलकर काम कर रहे हैं। हर दौर में भारत अमेरिका के संबंध मजबूत हुए हैं। तो ये कुछ अहम बातें यहाँ पर पीएम मोदी ने की हैं और यहाँ पर जो सहयोग है दोनों देशों के बारे में उसके बारे में बात की। भारत के बारे में बात की कि भारत क्या कर रहा है, किस तरह से अपने लोगों के जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहा है। ये सभी बातें इन्होंने यहाँ पर कही। इसमें एक अमेरिकी कवि के भी की कविता की कुछ लाइंस को उन्होंने कहा और ये भी कहा अपनी लिखी एक कविता का भी जिक्र किया। कहा कि सूरज उग रहा है इस वक्त। तो ये सभी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर कहीं। कई बार ऐसे मौके आए जब ज़बरदस्त तालियां यहाँ पर बजीं और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन उनके भाषण के लिए मिला। जो बातें उन्होंने कही उसके लिए सुनते हैं क्या कुछ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट द सेम टाइम मिस्टर स्पीकर, more than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. We were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now,
the United States has become one of our most important defense partners. सीधा रुख करते हैं महासिद्दीकी का, इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं। पूरा जो भाषण था प्रधानमंत्री का, उन्होंने अमेरिका और भारत के अहम रिश्तों की बात की, बदले रिश्तों की बात की, और भारत क्या कुछ कर रहा है वो भी उन्होंने वहां पर बताया, और काफ़ी तारीफ वहां पर नजर आ रही है पीएम के भाषण की। जी हाँ, अगर हम बहुत अहम मुद्दे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में वहाँ पे यूएस के कैपिटल हिल पे बोले, उसमें जो अहम मुद्दे भारत और अमेरिका के रिश्तों से जुड़े थे, उसमें हमने देखा कि जो हाउस के मेंबर्स थे और सेनेटर्स थे, उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई, जैसे कि डिफेंस पार्टनरशिप की जो अभी आपने उनका जो एक पोर्शन चलाया, वो जब उन्होंने बोला कि जब टर्न ऑफ द सेंचुरी थी तो अमेरिका और भारत के बीच में हार्डली कोई डिफेंस पार्टनरशिप थी, और ये बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब आज हम इस दौर में पहुंच गए हैं कि आज टेक पार्टनरशिप की, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है। कादम्बनी, आज जब बायलैटरल मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि एक लैंडमार्क दिन है, ये डील एक लैंडमार्क होगी और एक के बीच में, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंश्योर करेगी भारत और अमेरिका के बीच में डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो उससे एक राउंड ऑफ अप्लॉज मिला उनको मेंबर्स से। दूसरा, जब उन्होंने यूक्रेन के बारे में, युद्ध के बारे में बात की, उन्होंने बोला कि यूएन चार्टर के हिसाब से चलना चाहिए, उसको अध्ययन करना चाहिए, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हमें कुछ भी करके जो ये वॉर चल रही है यूक्रेन में, इसको रोकना होगा, और जो ब्लडशेड हो रहा है उसको भी रोकना होगा। तो इससे भी मेंबर्स ने अग्रीमेंट में उठ के एक तरह से सराहा जो स्टैंड भारत ने लिया है और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वक्त कैपिटल में बोला था। इसके अलावा अगर हम कुछ और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट देखें तो मेरे ख्याल से एक रेफरेंस था जो चीन की तरफ था रेफरेंस, जब उन्होंने मेंशन किया कि जो इंडो पैसिफिक है उसमें इस वक्त कोऑर्डिनेशन, यानी कि जो एक तरह से हम चीन का दबदबा देखें, चीन का नाम नहीं इस्तेमाल किया गया कादम्बनी, लेकिन रेफरेंस बहुत क्लियर है, क्योंकि इंडो पैसिफिक में जब भी अग्रेशन की बात आती है और तो चीन की तरफ ही उंगलियां उठती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि जो इंडिया और अमेरिका की पार्टनरशिप है, उसके लिए ये एक कोर सेंट्रल कंसर्न है, ये एक चिंता की बात है कि कोई कंट्री इस इंडो पैसिफिक में कोऑर्डिनेशन का इस्तेमाल कर रही है। तो ये कुछ बड़े अहम मुद्दे थे जो प्रधानमंत्री मोदी ने उठाया। एक जगह जहां और उनको अपलॉज मिला वो था जब उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI ने बहुत एडवांसेस किए हैं हाल फिलहाल में, लेकिन उनको तो एक और AI अहम है और वो है अमेरिका इंडिया। तो जहां पर भी दोनों देशों के रिश्ते और उसको कैसे बेहतर बनाए उसका रेफरेंस था, तो जरूर तालियां बजी, और एक ताली कुछ तालियां तभी, ज्यादातर तालियां तभी बजी कादम्बनी जब उन्होंने इंडो एशियन अमेरिकन कम्युनिटी की बात करी, उसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करी, और ये कहा कि एक महिला जो ये पीछे हैं उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, भारत से ओरिजिन की है, भारत में उसके रूट्स हैं, और तब भी कमला हैरिस के तरफ जब उन्होंने इशारा किया तब भी काफी तालियां बजी। दूसरी बात मैं ये भी बता दूं कादम्बनी, इस पब्लिक गैलरी में जो हाउस के मेंबर्स नहीं है, बाहर पब्लिक से आए थे, वो गैलरी ज्यादातर इंडियन अमेरिकन से भरी हुई थी, इसीलिए जो आपने मोदी मोदी की चांटिंग सुनी वो ये पब्लिक गैलरी से आ रही थी। शुक्रिया महा आपका इस सब जानकारी के लिए। तो काफ़ी कुछ पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में यहाँ पर कहा, और इसमें कई मौके आए जब वहाँ पर जो सेनेटर्स थे उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया, उठकर तालियां भी जो है बजाई। AI का जिक्र जो महा ने किया वो आपको सुनाते हैं पीएम मोदी के इस भाषण में क्या उन्होंने बात वहां पर कही, और यूक्रेन को लेकर भी जो उन्होंने बात कही अपनी। इन द पास्ट फ्यू इयर्स देयर हैव बीन many advances
in AI, artificial intelligence. At the same time, there have been even more momentous development in another AI, America and India. The last few years have seen deeply disruptive developments.